Good morning. Good morning on a very bright Sunday morning from India. And I'm Shashi Dhar, your host. I'm founder of Divine Healing Valley, and I welcome you to this orientation program of Vedic Healing and Vedanta Wisdom program. And I invite all the guests and all the participants here for a wonderful, wonderful orientation program for 1.5 hours. And my promise to you is this session of 1.5 hours is going to be really, really valuable for you. And you will go back from this session having been served and seen value in your life. So that is my promise to you. Yes, so first of all, let me welcome all the people who are here. So you could be a participant who has just completed the program. You could be a participant who has completed the program before. We call them graduates, right? So there will be many graduates here who will definitely be sharing what they got out of the program. Yes, so if you are a participant who has completed the program and who is here, having invited some guests, so you can raise your hand. So let's acknowledge you for that. If you're a graduate, if you have done the program before, you should raise your hand. Yes, so we know who has completed the programs, and those who are not on the video, let me say Rupa and Jyoti ji also, and Pooja also has completed the program. So let's acknowledge them. Yes. And there could be some people who are come here for the first time for this program, orientation. So we have all the guests who have been invited by our participants. So we have Rajesh ji, we have Harsh ji, we have Baljinder ji, and we have Monica ji. So we have the guests who are attending the orientation now. Let's acknowledge them. Thank you for being here. And as I promised, this session will be valuable for you, and you will see new opportunities in your life, right? So you will see new opportunities, how to get breakthroughs in your life. So that is what my promise to you is. And of course, all of you know me, and I'm Shashi Dhar. Just to give you a small introduction about myself, my spiritual journey, or rather my conscious spiritual evolution, that journey started somewhere in around 25 years back in 1997 when I met my Reiki Masters, Dr. Nalin Nirula and Renu Nirula. So that's the beginning of my spiritual journey. And since then, my spiritual journey has only gone one way, skyrocketing upwards. And I have tried many kind of healing modalities for myself. I started with Reiki healing, then pranic healing, quantum healing, karmic healing, access bars, and many other you can say programs which I've attended parallelly along with it, like Art of Living, Brahma Kumaris, and Vedic healing. And all these combined together to propel my spiritual journey to a point where during lockdown, I decided that this is what I want to do for the rest of my life. And I started the program of Vedic healing and Vedanta wisdom. So it has been around 4 years now that we have been conducting these programs. And it has given a lot of value to all the participants and all the healers who are also transforming all the people in their life. So this is a very, very powerful program, and it has transformed all areas of my life, health, wealth, relationships. And of course, this is my way of living now. This is what I teach. This is what I preach. This is what I live. Yes. So that's a little bit about my spiritual journey. And very soon you will be hearing a lot from our other participants who have done this program, and they will be sharing their benefits. But before that, let me give an invitation to all the guests. If you have any questions in your mind right now, अगर अभी आपके दिमाग में कोई भी सवाल हैं जो आप पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं. So I will handle that question first, and then we will move on with the program schedule. So any question from any guests जो भी यहाँ पे हैं, कोई पूछना चाह रहे हैं तो पूछिए सर. Yes, Rajesh, you go ahead. So I requested Ranjana for healing, and I realized there wasn't pain in my knees, and day before yesterday and before that also there was the pain increased. But today morning, yesterday even I shared with Ranjana as well it has increased. Have you done something? बात तो हीलिंग की हुई थी, हो हर्टिंग रहा है,
कहने लगे हो सकता है कुछ पहले निकलेगा, and after that you will. But today morning I found that pain has substantially reduced. So does it work that way, sir? I want to. Yes, very good, Rajesh ji. First of all, let me acknowledge you that you have got a first-hand experience of spiritual healing, and obviously that is a distance healing. Yeah. So just to tell my guests who are here, if you don't know what is spiritual healing के दो modalities होते हैं, touch healing और distance healing. So what Ranjana ji had done for Rajesh ji is spiritual healing, which is distance healing. Correct, Ranjana ji? Yes. तो spiritual जो distance healing किया तो the energy flows from one person to the other person at a distance. So distance is never a barrier for spiritual healing. Okay, you will come to know more about it when we go through the presentation. I have a small presentation made, so I will take you through that. But yes, what happens is आपके जो भी शरीर में कोई तकलीफ आती है, ये एक कार्मिक पैटर्न है, करेक्ट? ये आपके कार्मिक पेन है, और ये कर्मस जो है डीप रूटेड होते हैं सबकॉन्शियस माइंड में. तो जब हम हीलिंग शुरू करते हैं तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे मधुमक्खी का छत्ता है. हाँ? तो उसको अगर हमको हील करना है, मतलब वो पूरा का पूरा हटाना है, तो शुरू में क्या होगा? डिस्टर्बेंस होगी थोड़ी सी, राइट? क्योंकि इनिशियली द मधुमक्खी के छत्ते को हाथ लगाएंगे तो क्या होगा? वो सारे एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं. तो पेन कभी कभी डिसॉल्व हो जाता है, कभी वो बाहर निकल जाता है. तो जब वो बाहर निकलता है तो पेन थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन इवेंचुअली वो डिसॉल्व हो जाता है हीलिंग एनर्जी में, और पेन खत्म हो जाता है और प्रॉपर हीलिंग हो जाती है. तो रूट कॉज से हीलिंग होती है. इसीलिए कभी कभी लगता है कि वो बढ़ गया है, लेकिन बढ़ा नहीं होता, वो जा रहा होता है. वो जितने सालों से, कितने जन्मों से आपके चित्त में दबा हुआ है, वो वहां से निकल के बाहर जाएगा. तो थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन पूरा साफ हो जाता है तो फिर आराम मिल जाता है. सो दैट इज व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस, राजेश जी. तो फर्स्ट अगेन राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर Thank you Rajesh very ji much. and of course Ranjana for successfully having done the healing session. Very good. All right. So anybody else who has any question or anything you want to share? What is spiritual मैं healing? अभी सेशन स्टार्ट होने से 20 मिनट पहले लाइट चली गई एंड आई वाज सो डिसअपॉइंटेड. आई सेड लाइक लाइट चली गई, वाईफाई का प्रॉब्लम आ जाएगा, ये हो जाएगा. एंड आई जस्ट सैट फॉर द हीलिंग कि लाइट आ जाए एटलीस्ट टाइम पर. एंड द मोमेंट यू सेड वेलकम टू द डिवाइन हीलिंग वैली एंड लाइट केम. I just enjoy these small little miracles in my life a lot. Perfect. Absolutely right. If you're unstoppable, the universe will make way for you. I always say this. When you declare something to the universe, I want to attend the session or I want to do this program, and declare it to the universe gives you blessings. Universe कहती है तथास्तु, और वो आपकी लाइफ में होने लग जाता है. कैसे होगा वो पता नहीं, लेकिन हो जाता है. Divine will take care of it. Correct? So healing also happens that way only, because no healer can actually claim that he does the healing. Like for example, if anybody comes to me for healing, Shashi Dhar has no power to heal anyone. It is the divine energies which I'm connected to, that flows through me and goes to the healer, and that heals the person. तो healing हमेशा divine ही करता है. तो divine के साथ वो connection जो बनाना होता है, वो जरूरी होता है for spiritual healing. And that is what spiritual healing is all about, right? Okay, very good, Rajesh ji and Gunjan ji for sharing that. Yes. Anybody else who wants to share anything? Who wants to ask any question? पहले तो मैं गेस्ट को मौका दूंगा. कोई भी सवाल हो. Let me also welcome who have just joined now. Simar ji has joined now. So Harsh ji, Simar ji, Baljinder ji, anything that you want to ask regarding Vedic healing and Vedanta wisdom program? Anything that you want to ask, please go ahead. No questions? Okay, so I will give that opportunity to you. Whenever you want to ask any question, you can do that. So what I will do now is, let me see if anybody is ready for some sharing, because the more the participants share, then it is easier for the guests to understand what it is all about. Yes. So Rupa, if you are there, and if you want to share something about your experience with this program, you can go ahead. Oh, she will take some time. Okay, so let me move on to someone else.
कौन शेयर करना चाहेंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ द गेस्ट्स? यस कुंजन जी, गो अहेड। सर, जब मैंने DHV ज्वाइन किया था तो आई वॉज हाफ डेड, आई वॉज लाइक अ डेड बॉडी, सो बट आई वॉज एक्टिंग लाइक अ वेरी स्मार्ट लेडी कि मुझे सब पता है, मुझे सारा ज्ञान है, मुझे सब पता है, कुछ नहीं होता, जिंदगी बस ऐसे ही कट जाएगी, रो धो के जैसे काटनी है काट के इसको खत्म करो, अगली जिंदगी देखेंगे. But then I connected with you, and then I came to know that it is all created by me only. So the creation is all done by me. It is all in my head. So I have to take it out. अपने विकारों को पहले काम करो तो यही जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी. तो ये चीज मेरे साथ हुआ है. And you know how I am living now. I am a very happy soul. And विकार है, ये नहीं है मैं कहती कि विकार नहीं है, बट वो धीरे धीरे जा रहे हैं. Very good, Gunjan ji. Let's acknowledge Gunjan ji for a wonderful sharing. She has actually transformed all the areas of her life. So, and in her over-excitement, she must have mixed up all the benefits. So let me just make it clear to you that she has transformed her area of health. Like you said, she was half dead and now she's fully bubbling with energy. So her energy level has gone up and her health has improved a lot. Her mental and emotional strength that she has gained with the healing and the Vedanta wisdom is absolutely phenomenal. And she is completely in control of our life, even financial health. So she has taken care of our finances individually, and she is doing a great job, and she is living a very happy and fulfilled life now. So that is what she is trying to share. Yes. And Actually, my relationships were also all distorted, which I actually got the benefit. मेरे सारे relationship वापस आ रहे हैं, मेरे को अजीब लग रहा है कि ये क्या हो गया. right. So she has got a major breakthrough in her relationship, and in fact, one of the programs her mother had was there as a guest, and that was such an emotional high point for her that she couldn't share anything because she saw her mother in the list of guests, right? So I still remember that day. So whether it is health, whether it is wealth, whether it is relationships, it can create magic and miracles in your life, right? Because in the world of divine healing, there is no logic, there is only magic. तो जब डिवाइन की हीलिंग से आप कनेक्ट करते हो तो लाइफ में सिर्फ मैजिक होते हैं. अपने दिमाग से करोगे तो सिर्फ लॉजिक होगा, लेकिन डिवाइन के मैजिक से करोगे तो आपकी लाइफ में मैजिक आएंगे. So that is what I would like to share about the healing part. So welcome. Thank you, Gunjan ji, for sharing that, and welcome Preeti ji. Yes. So that is a little introduction about the spiritual healing, right? Yes, Ranjana, you raised your hand. You have a question you want to share? I want to share, but I'll share in the last. No worries. Okay, that's fine. So if you have any question or something for the participants, that is welcome right now. Okay. So let me also share with you some general questions that people have about healing. तो सबसे पहले तो लोग ये बोलते हैं कि स्पिरिचुअल हीलिंग है क्या. तो कितने लोगों को, जो गेस्ट हैं, कितने लोगों को मालूम है स्पिरिचुअल हीलिंग क्या है? मेडिकल हीलिंग तो हम सब लोग जानते हैं, राइट? आप बीमार होते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो और फिर डॉक्टर आपको कोई दवाइयाँ देता है. मे बी अगर कुछ ज़्यादा सीरियस हो तो कोई 1 महीने की दवाई खा लेते हैं, वरना हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, फिर ट्रीटमेंट होती है, कभी कभी सर्जरी भी होती है. तो मेडिकल हीलिंग इज व्हाट वी आर नॉर्मली अवेयर ऑफ व्हेन यू फॉल सिक. जब शरीर में कोई तकलीफ होती है तो हम मेडिकल हीलिंग के लिए जाते हैं. तो प्रॉब्लम होती है तब हीलिंग के लिए जाते हैं. तो अक्सर लोग मेरे से बोलते हैं मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं स्पिरिचुअल हीलिंग क्यों करूं? तो प्रॉब्लम है तब तो पक्का कराना चाहिए, लेकिन अगर प्रॉब्लम नहीं है देन व्हाई शुड यू गो फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम, जहाँ पे आप स्पिरिचुअल हीलिंग सीखेंगे या वेदांता विजडम सीखेंगे तो क्या होगा? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इज वन एरिया ऑफ योर लाइफ. बट इवन इफ देयर इज नो प्रॉब्लम, you could be simply curious. How many of you are here just because you are very curious about what this program is all about? In fact, my whole spiritual journey started with curiosity. Before that, my life was absolutely, अब देखूं तो अगर पता लगता है कि full of suffering and misery. लेकिन जैसे गुंजन जी ने शेयर किया, I used to be, कि मैं बहुत स्मार्ट इंसान हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, क्रॉम्पटन ग्रीस में काम कर रहा हूँ,
कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ and I'm enjoying my life, but actually I was suffering a lot and I was full of suffering and misery in my life. My relationships were not working, my health was bad, and I was fighting with everybody. So mental and emotional stability nahi thi, strength nahi thi. So all that was happening. And when the healing started, complete transformation. Correct? So sometimes we come here for curiosity and then we see, okay, this is available. मेरे को पता ही नहीं था कि ये भी चीजें हो सकती है. So I thought, अगर आप मार्केटिंग और सेल्स जॉब में हो तो स्ट्रेस नॉर्मल है, बॉस से झगड़ा नॉर्मल है, लोगों से रिलेशनशिप खराब होना, गाली गलौज करना या मार धाड़ करना नॉर्मल है. तो और रात को अगर नींद नहीं आ रही है तो या तो स्लीपिंग पिल्स खा लो या फिर 2 ड्रिंक लगा लो, ये नॉर्मल है. So that is what I thought everything was normal. It was only in my spiritual journey I realized that nothing of that is normal. That is absolutely abnormal. आप घोड़े बेच के सो without any sleeping pills, that is the right kind of health that we are talking of. जब आपको बिना किसी external substances के आराम से अच्छी नींद आ जाए, आप आराम से अपने physically, mentally और emotional state को balance कर सकते हो, that is health. Correct? So these are things that will open up for you when you come for the healing. राइट. तो चाहे वो हेल्थ के एरिया में हो, चाहे वेल्थ के एरिया में हो, अब कई जगह पे होते हैं लोग बिजनेस में स्ट्रेस में होते हैं, बॉस के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है, क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है, झूठ बोलना नॉर्मल है, थोड़ा एक्सैजरेट करके बोलना नॉर्मल है. तो ये सब बिलीफ सिस्टम जो हमारे बने हुए हैं, ये हमारी लाइफ में बहुत सफरिंग और मिजरी क्रिएट करते हैं और हमको मालूम नहीं होता कि हम सफर कर रहे हैं. वी थिंक दैट इज नॉर्मल. So you have to understand, when you come to spiritual healing, you will actually find out the truth about yourself. You will have, you will actually be authentic in your life and you will have a lot of intensity in your life. तो आपके कर्मों में, आपके actions में you will see lot of intensity and authenticity, जिसको शास्त्रों की भाषा में हम बोलें तो पुरुषार्थ. तो आपको अपने पुरुषार्थ के बारे में बहुत clarity मिलती है. And then you create your destiny with your karma, with your actions. And that is how you transform your life. Yes. So I'm saying a lot of things. So if something is opening up, you should raise your hand and ask any questions. अगर कोई सवाल है तो. Right? Yes, Rajesh ji. Today Rajesh ji is talking on behalf of all the guests. Right? शशि सर, मैं ये कह रहा था कि when you talk about कि what the guests understand about spiritual healing. So what understanding I have is so there is universal energy as well. Can we have the tools, the way to access that energy, and that leads to healing? To my understanding, this is what spiritual healing is. Absolutely perfect. On the dot. बिल्कुल सही कहा sir. Right? So there is a universal energy which we normally call as the pranic energy. Right? तो पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है. प्राणिक एनर्जी जो है लाइफ फोर्स एनर्जी है, उसी लाइफ फोर्स एनर्जी को हम चैनलाइज करते हैं हमारे प्राणमय कोश में. तो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, बाकी पर आपने ये बात शेयर दी है तो मैं बता देता हूँ. सो जब आप एक्चुअली स्पिरिचुअल हीलिंग कर रहे हैं तो वो हीलिंग एनर्जी आपके प्राणमय कोश में, आपके नाड़ियों में प्रवाह करती है. और हमारे शरीर में जो भी तकलीफ आती है, हमारी लाइफ में जितनी तकलीफें आ रही हैं, वो इसीलिए हैं कि प्राण शक्ति जो हमारे नाड़ियों में बह रही है उसका प्रवाह काफ़ी कम है, काफ़ी धीरे है. इसीलिए बहुत सारे ब्लॉक्स बन जाते हैं. तो हमारे जो 7 मेजर चक्रास होते हैं, जो मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक 7 मेजर चक्रास हैं, उनमें ब्लॉक्स आ जाते हैं और प्राण शक्ति फ्लो नहीं करती है. और जहाँ जहाँ प्राण शक्ति फ्लो नहीं करती है, वहाँ वहाँ शरीर में विकार आ जाते हैं या बीमारियाँ आ जाती हैं, मन में विकार आ जाते हैं, और उनकी वजह से हमारे बॉडी और माइंड दोनों में प्रॉब्लम आ जाती है. सो यू हैव फिजिकल प्रॉब्लम्स इन द फिजिकल बॉडी एंड यू हैव stress and anxiety in the mind body. And this pranamaya kosh is the coordination between the mind and body. तो जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल हीलिंग करेंगे, प्राणमय कोश में एनर्जी का प्रभाव होता है, बॉडी और माइंड हील होने शुरू हो जाते हैं. So when we talk of spiritual healing, it is called holistic healing. It affects you physically, body में. It affects you mentally and emotionally in the mind. It helps you karmically, यानी कि आपके कर्मास जो हैं, आपके चित्त में जितने भी कार्मिक इम्प्रिंट्स हैं, वो सब हील होते हैं. एंड ओवरऑल आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को एक बूस्टर डोज मिल जाता है.
That is why we call spiritual healing as holistic healing, and it is part of the spiritual evolution. जो आपकी spiritual journey है उसको आगे बढ़ाती है. तो simply for spiritual growth you can do spiritual healing. आपको किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है. जैसे आपने अभी प्रॉब्लम थी इसलिए हीलिंग ली. अगर आप प्रॉब्लम नहीं भी हो तो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहाँ पे आप स्पिरिचुअल हीलिंग सीखेंगे, अपनी हीलिंग करेंगे, लोगों की हीलिंग करेंगे, और जो वेदांता विजडम है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ज्ञान योग है. एंड वो ज्ञान योग ऐसा है जो आपको सेल्फ रियलाइजेशन के लेवल तक ले जा सकता है. एंड दैट इज द प्रॉमिस ऑफ दिस प्रोग्राम. यस. So Rajesh, did I answer your question? Yes, sir. Absolutely perfect. Let's acknowledge Rajesh. Very good. Okay, so I'll keep answering the questions, and meanwhile I will keep taking the sharing. So whoever is ready for the sharing should raise your hand. On Teyar The Ranjana. Yes. You can go ahead and share. Yes. Yes, sir. I'll share my journey with the divine healing valley. So I met with you in a program of Life and Breath, and I just got to know a little bit of this from some participants, and मैंने कोई भी ऐसा introduction session join नहीं किया. Immediately told sir कि जब भी आपका next batch होगा, I'm in, take me in and consider me in, and then I joined. So after joining, ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे ये प्रोफेशनली करना है. So I started with the healing, and बहुत छोटे छोटे और बड़े बड़े इंस्टेंसेस इतने ये पिछले 3 महीने में हुए हैं. जैसे मैं एक शादी में गई और मैं अचानक से वहाँ बीमार हो गई. देन आई डिड, मैंने कहा ये तो अभी अभी नई नई हीलिंग सीखी है, लेट्स ट्राई मी ऑन माई सेल्फ फर्स्ट. सो आई डिड हीलिंग फॉर माई सेल्फ, एंड मॉर्निंग में मैं मतलब जो भी 10 बजे से जो भी प्रोग्राम था उसमें मैं डांस कर रही थी. तो सो दैट वाज द प्रोग्राम. और उसके बाद मेरे फादर इन लॉ बहुत बीमार हुए. उनका ऑपरेशन हुआ, एक ऑपरेशन हुआ, दूसरा ऑपरेशन ड्यू था. 1 महीने बाद वो डिस्चार्ज होके आए हैं. एंड जब उनका फर्स्ट ऑपरेशन हुआ था फॉर हिज हिप रिप्लेसमेंट, आई स्टार्टेड हिज हीलिंग. तो मैंने मदर इन लॉ को थोड़ा सा ब्रीफ किया और उनसे वो परमिशन लेके आई स्टार्टेड हर हीलिंग, हिज हीलिंग. एंड मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन ने ही मतलब उनको ठीक किया है. जो हीलिंग मैं कर रही हूँ उसकी वजह से ही उनका सेकेंड ऑपरेशन नहीं हुआ और वो घर वापस आ गए. और अब वो घर में मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं. और उनको 1 महीने से वो हॉस्पिटल में थे, तो ही वाज लूजिंग हिज ऑल सेंसेस. मतलब एक ब्रेन उनका थोड़ा इनएक्टिव होना और थोड़ा अजीब सा होने लग गया था. तो ही जो जिस दिन वो घर आए ना, ही वाज नॉट इन सेंसेस, ही वाज नॉट टॉकिंग, बस ही वाज सिटिंग ऑन द sofa. And when I asked him that I am going home, because he was in my brother-in-law's home at this time, so I told him that I'm going. He called me and said, come do this healing for me. And that is the thing which my husband, he was sharing with our relatives who has come to meet. We were sitting in the night and he was sharing this thing that I cannot forget that moment when he called Ranjana and said this, do this healing for me also. So this is my small journey, and it is continuing. And it will and I must share that this thing is also transforming my relationship with professional friend also. With my this immediate boss I used to fight like a dog and cat fight always. But when you know these spiritual techniques of healing, you can heal the relationship also with anyone. And वो भी बहुत बेटर हो रहे हैं. और एंड मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजें और बड़ी बड़ी चीजें भी आपकी लाइफ में होती हैं तो मजा आ जाता है. एंड ये तो था एक हीलिंग का शेयरिंग. और दूसरा है ये जो
अपना वेदांतिक विजडम है उसमें जो क्लैरिटी है, आई वांट टू ऑलवेज यू नो रीड अबाउट दी उपनिषद्स एंड वेदास, बट समहाउ मैं कभी इन चीज़ों को बुक्स ले आते हैं, टाइम ही लगता है। और ये कॉलिंग ना अपने आप आई मेरे में। मैंने भी छोटी छोटी कुछ दक्षिणेश्वरी काली टेम्पल के आसपास जो रामकृष्ण परमहंस की बुक्स मिलती हैं वो मैं लेके आई थी उपनिषद्स पे। तो उनको पढ़ के इतना क्लैरिटी नहीं आता था जितना ये प्रोग्राम करके अगर उन चीज़ों को पढ़ो तो और ज़्यादा आपको इंटरेस्ट भी आता है और क्लैरिटी भी आती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रंजन। सार आप सर के सेशंस में है ना। एंड वन मोर थिंग, द ग्रेटेस्ट थिंग इज यू नो, जब आप ऐसे टीचर या गुरु के साथ जुड़ते हो ना, ही आई हैव सीन हिम, यू नो, ही इज राउंड द क्लॉक विद मी एंड एनी टाइम कुछ भी डाउट होता है ना, तो बस वो जब सो रहे होते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है रिप्लाई नहीं, अब कोई रिप्लाई नहीं आया, इट मींस ही इज स्लीपिंग। अदरवाइज ही विल इमीडिएटली से जब तुम्हें टाइम लगे ना तुम कॉल करना और जब वो जितना वो आंसर कर सकते हैं मैसेज में वो कर देते हैं। सो थैंक यू सर फॉर डूइंग ऑल दिस फॉर मी। थैंक यू रंजना। लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रंजना। ये बहुत बढ़िया शेयरिंग और बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने अपनी लाइफ में करी है। यस, एंड शी हैज बीन अ वेरी studious kind of a participant who was always following all the instructions and doing the homework and all the work which is required for the participation, and that's why she got such wonderful results. So only 3 months into the journey, just program once and she is on the path. Very good, bahut badhiya, great. All right, anybody else who would like to share? Pooja ji, if you are there, if you want to share something. Yeah, coming to that, I've noticed the hands raised of Preeti ji and Jyoti ji, but let me first check. Pooja, if you are there, if you want to share something, please go ahead. Yes, Yeah. sir. Yeah, Pooja ji, yeah, go ahead. My name is Are you able to my hear name me? is Jyoti Arora. Jyoti ji, एक मिनट hold telling करिए। for the sake of ज्योति जी, एक मिनट होल्ड करिए। Yes, लेट मी yes, शेयर, लेट मी हियर दैट फ्रॉम पूजा फर्स्ट, क्योंकि Yeah. she, yeah पूजा, go ahead. Okay, so I will first start with saying thank you to Gunjan ma'am. So I think I remember I was taking like session with her, tarot session, and then she said like about the Vedanta wisdom. So she said like these classes are going to happen, just join. So I had no idea about it, but I had a curiosity to just to know what it is. Though I didn't complete like the 7 healing sessions, but the again the half portion that you started, like the Vedanta wisdom, I think it has changed me, like transformed in a way better way. I think I am more happier than I was. Every time when some situation or small situation comes, all those wisdom that you have given, you have taught in that lesson, I just apply it and I see, okay, this is transforming. Before, like I used to sit and think for, overthink, okay, ये क्या हो गया, क्या है, कैसा है, so many overthinking. But now like तुरंत ऐसे कुछ भी ऐसे wisdom suddenly ऐसे याद आता जाता है, and then I'll be like, okay, it just take 2 or 3 hours to just come out of those things that I'm stuck into. So I think I'm still applying all those wisdom that you have taught, and it is completely transforming. I mean, I think I'm way more happier and peace, and that is what it is required. So thank you so much for that. Thank you, Pooja ji, and that's wonderful sharing. Let's acknowledge Pooja for that, and let me also admire her for her courage. It is past midnight in Canada, and she is awake just to attend this orientation. So thank you, Pooja, for your commitment. Thank you. And that's why I thought I should first give you the opportunity to share. Now, that if you she want, is a motivational speaker also. yes. So I must promote her also. Yes, so she's a motivational speaker. She's doing absolutely great in life, and she's bounced back from a personal, you can say, what do you say, upset or something in life. So she has bounced back very strongly, and she is moving in 4th gear now in her life. Okay, so let's acknowledge Pooja for that. Very good, Pooja. Thank तो you. जैसे प्रीति जी और आपने मुझे पकड़ा था, ऐसे मैंने पूजा को पकड़ा था। No, you are lying. It is only the timing of the divine. It is only the divine calling. बाकी सब जिनको आना होता है वो आते हैं, जिनको नहीं आना होता वो नहीं आते. It's simple है. Okay, yes.
So who नहीं else सर, wants to झूठ share? बोलते हुए पकड़ा था ना मेरे को Hold आपने on, और hold on, प्रीति hold जी on, ने तो। hold on, Gunjan ji. Yeah. Okay. Yes, who wants to share? Preeti ji and Jyoti. Okay, first Jyoti ji. And let me also admire Jyoti ji because she met with an accident and her hand is in a plaster. Yeah, in a sling rather, but she's courageous enough to participate in the program today. Welcome, welcome Jyoti ji. Go ahead. Yeah, when I joined Shashi Dhar ji, I was in acute depression, and मुझे लगा कि my life has आपकी आवाज नहीं आ रही है। and हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। pardon, ठीक है। Go ahead, go ahead. मैं कभी ठीक नहीं होंगी, and I used to call daily. सबको आवाज आ रही है या मेरे को नहीं आ रही है? Patience he used to say ज्योति कि जी, नहीं नहीं तुम अभी करो, तो वो मैंने join किया, and so much transformation has come inside me कि ज्योति जी मैंने आपको म्यूट कर दिया है, थोड़ा Yes. सा आपका नेट में प्रॉब्लम है, होल्ड कीजिए, आई विल कम बैक टू यू। ठीक है जी, आप थोड़ा सा नेट आपका शायद फ्लक्चुएट हो रहा है, तो आवाज क्लियर सुनाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा थोड़ा सा होल्ड करिए, वी विल कम बैक टू यू लेटर ऑन। Okay, so before we take more sharings, let me also clarify what the participants have got. Let me hear something from the guests. क्या clarity मिल रही है guests को, या कोई सवाल हैं आपके तो आप पूछ सकते हैं। So Mandeep ji, welcome, and Rajesh ji, if you have any question, please put your question ahead, so that because this session is basically for the guests who have come. तो अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं, I will answer your questions. And I also have a small presentation which I will take you through. But first I wanted the participants to share so that you can get some first-hand information from them. Yes, so any question? At this point, no questions, sir. Okay, Rajesh ji, welcome. Thank you. Ji. Yes. Okay, so what I will do now is, since the people in US and Canada have already shared and Rupa ji is not on the screen, so what I will do is I will share a small presentation. If everybody is fine with it, we'll go through a presentation fast, and then we will come back and have the discussions and more sharings. Is that okay? Is that okay with everybody? Fine. Show me a thumbs up. Is that okay? All right, good, very good. So what I will do now is I will take you through a presentation. So around 6 or 7 slides. So I'll quickly run through that, and I will take questions after that. So this is Vedic healing and Vedanta wisdom. And as I said, all of you know me now. Shashi Dhar, corporate trainer, life coach, Reiki Master and Spiritual Healer. What does this program offer? This offers power and magic of Vedic healing. And when we talk of healing, we need to understand the first thing that will happen here in this program is you will experience a profound connection with the divine spiritual healing energy. So your connection with the divine will be re-established. When I say re-established, that connection is already there. At the soul level, you are always connected to the divine, but that connection is somehow very, very weak. So we will re-establish that connection with the divine healing energy, and that is a very, very profound experience that you will experience. It will become real in your life. Next, we will be practicing and learning and practicing many healing techniques which are holistic in nature. And I told you, when we talk of holistic nature, we are talking of physical, mental, emotional, spiritual, and karmic aspects of life. Along with that, we will have a lot of wisdom that is coming to you from Patanjali Yoga Sutra, and also the Yoga Vashisht, which is being done in the Wednesday sessions now. So you will get a lot of wisdom from there. And the techniques that you learn for enhancing your spiritual growth, that will have multiplying effects with time. Normally क्या होता है, जब आप कोई प्रोग्राम अटेंड करते हैं तो उसके बेनिफिट्स जो हैं थोड़े दिनों बाद कम होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये हीलिंग टेक्निक्स जो हैं, जो आप प्रैक्टिस करेंगे,
इनके बेनिफिट्स टाइम के साथ बढ़ते जाते हैं. And that is the beauty of this healing program of spiritual healing, that the benefits will multiply over time and give you transformation at different levels and different areas of your life. When we talk of Vedanta wisdom, you will generate insights by swadhyaya, introspection, and that will transform all areas of your life. Like you hear many participants saying that. So you will get a lot of insights of wisdom, intuition, and that will transform many areas of your life where you actually want breakthroughs. It will unveil or uncover the obstacles that you are facing in life in your spiritual journey. तो आपके spiritual journey में जो obstacles हैं, जो विकार हैं, जो आपके बोल सकते हैं, जैसे हमारे षड रिपु बोलते हैं हमारे शास्त्रों में, जो आपके ऑब्स्टिकल्स हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, तो ये आपके ऑब्स्टिकल्स हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में. तो आप उनको अनकवर कर पाएंगे और उनको बाईपास या इनको ओवरकम करने का टेक्निक जो है वो आपको मिलेगा. तो अलॉन्ग विद द हीलिंग एंड द वेदांता विजडम, यू विल overcome your obstacles and move forward in your spiritual journey. You will understand the real nature of God within you, not outside you. So you will change your concepts of divinity. You will understand and realize the real nature of God within you, and you will transcend the level of existence. So we exist as a triune being, body, mind and soul. तो आप उन लेवल को बाईपास करके या ट्रांसेंड करके अपने रियल नेचर तक पहुंचेंगे. एंड वी ऑल नो आवर रियल नेचर इज दैट वी आर डिवाइन. सत्य चित आनंद जो हमारा नेचर है उसको आप रियलाइज कर पाएंगे. तो दैट इज द पाथ दैट यू विल बी मूविंग ऑन. एंड जो भी आप यहाँ पे टेक्निक सीखेंगे, इट विल गिव यू एन एक्सेस टू लिव लाइफ पावरफुली, टू लिव लाइफ ऑनगोइंगली with power, freedom and joy, which means love, peace and joy is your birthright. Freedom is your birthright. So that will be the context of your life once you do this program. Moving on. When we talk of Vedic healing or we talk of Vedanta wisdom, the foundation or the fundamental, you can say building block, is the Om mantra. Like when we do different modalities of healing, Reiki healing have separate symbols, karmic healing has separate symbols. When we talk of Vedic healing, we are going to talk of only symbol of Om mantra. And we all know the whole Brahmand जो है, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स जो है ओम की वाइब्रेशन से ही क्रिएट हुआ है. तो आप अपनी लाइफ में भी जो एरियाज में प्रॉब्लम है उनको आप अपनी लाइफ को दोबारा से क्रिएट और रिक्रिएट कर सकते हैं ओम के सिंबल से. तो ओम के अलग अलग तरीके हैं कैसे आप हीलिंग मॉडलिटीज में इसको यूज करेंगे, एंड इनकी वजह से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आसानी से हो जाता है और टेक्निक्स जो सीखेंगे आप वो आसानी से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे. तो दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द प्रोग्राम. एंड ऑफ कोर्स वी कैन सी फ्रॉम द स्लाइड, ओम इज मेड अप ऑफ 3 syllables, आ उ अम. This is a one whole session on this. Okay, so I'll tell you just the brief. A is the waking state, Jagrat Avastha. U is the Swapn state, dream state, and is the Sushupti or the deep sleep state. So A, U, represents the waking, the dream state, and the deep sleep state. Beyond that is the Maya, and beyond Maya is your real nature of Sat Chit Anand, which we call as the Turiya unity state. So that is the basic understanding of the Om symbol. And based on this, there are different ways how we are going to do the healing and transform the areas of your life. Going on. What are the benefits which you hear from the participants? Most of the benefits will be around this area of resolving past issues. Now, past issues could be past of this life or could be past lives. तो जितने भी आपके कार्मिक इम्प्रिंट्स आपके चित्त में हैं, जो पास्ट लाइफ से हो या पास्ट ऑफ दिस लाइफ से हो, चाइल्डहुड में हो, उन सब के जो इम्प्रिंट्स हैं उनसे आपको फ्रीडम मिलेगी. सो यू विल रिजॉल्व योर पास्ट इश्यूज, you will get freedom from the stress, anxiety, fear, any negative emotion that you are experiencing. It transforms your self-image, which means you will get a boost in your self-esteem, self-respect, self-love. And अगर आप कोई बीमार हैं तो बीमारी से रिकवर करने के लिए
ये हीलिंग बहुत पावरफुल मानी जाती है। जैसे बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स हैं जो कीमो के बाद जिनका इम्यूनिटी लेवल लो हो जाता है, तो स्पिरिचुअल हीलिंग से आप उसको उनके इम्यूनिटी लेवल को वापस ला सकते हैं at a very easy way and in a faster way. And also people who have suffered from critical illness like heart attack, once they do the spiritual healing, the chances of the relapse of the disease goes down considerably. तो दोबारा से वो अटैक नहीं आता है, या दोबारा से आपको उस बीमारी के आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. So that is the power of this spiritual healing that you will experience in your life. Further, spiritual healing can actually create magic and miracles in all areas of your life, whether it be relationship, it could be disease, it could be any area, any freedom from any addiction or any anxiety that you are having. All this will be dealt with very powerfully with spiritual healing. So distance spiritual healing for divine magical results in all areas of your life. That is the punchline when we talk of spiritual healing. Now coming to Vedanta wisdom. Some of the benefits of Vedanta wisdom is given in these 3 bullet points you can see here. You will experience complete freedom from desires. You will transcend karma. Karma is desires. So when we talk of freedom from desires, you have to understand we are not saying that you will not have any desires. You will fulfill all your desires and you will still be free from them, which means there won't be any attachment to any desire. And you will experience freedom from your suffering and miseries. And we call that as transcend dukkha. And we all know dukkha has been mentioned in many of the religious texts. So Nanak Dukhya Sab Sansar, Dukkham Dukkham Sarvam Dukkham. So Dukkham is something which is very common to all the human beings on this planet Earth. So if you are saying that we will be experiencing freedom from suffering, this is absolutely huge. So you will actually get an access to how you can be free from the suffering and miseries in your life. And let me caution you here, pain is inevitable, but suffering and misery is optional because that is your own creation. So that is the wisdom that you will receive. And you also receive the Brahma Gyan, which means you will be free from the fear of death. In short, you will be free from body consciousness. And I will take that as a discussion after this presentation. So if anybody has any questions on this, we will discuss. But basically, you will be experiencing complete freedom from desires, freedom from suffering, and freedom from fear of death. That is the promise of the Vedanta wisdom. And this is each of these benefits is like something huge. So which you really will have to experience in your life when you participate in these programs. Moving on. So that completes a small capsule of presentation. So I will stop the presentation now and I will take questions and discussions now. Yes. So how many of you are still awake after the presentation? All right, good. So any questions? Any questions that you have? And this is for both the participants as well as the guests. So your participant says, oh, मैंने ये सब किया, मेरा ये एक point रह गया, तो you can catch hold of me. मेरे को ये नहीं मिला, तो वो मिल जाएगा. Don't worry. So any kind of questions you have, anything that you want to share, please go ahead. कौन बोलना चाहेंगे? Can you discuss something about Brahma Gyan? Okay, discuss about Brahma Gyan. Okay, fine. So you are jumping straight into the Vedanta wisdom. Okay. तो सबसे पहले वेदांता विजडम में 3 बेनिफिट्स हमने बताए, है ना. हीलिंग के तो क्लियर हो गए थे, हीलिंग के तो हमने डिस्कस भी कर लिए हैं, राइट. तो वेदांता विजडम में जो 3 बेनिफिट्स हमने बोले हैं, ये एक्चुअली बुलेट्स पॉइंट्स हैं, इसीलिए ताकि लोग इस पर डिस्कस करें. ठीक है. तो सबसे पहले डिजायर्स. तो आप ये सोच के देखिए, अगर आपके लाइफ में जितने भी डिजायर्स हैं, अगर वो आप फुलफिल कर लें और उससे फ्री भी हो जाएं. अक्सर क्या होता है, डिजायर्स का नेचर कैसा होता है, यू फुलफिल वन डिजायर, एक और डिजायर आ जाती है. इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, सुना है ना. ऐसे एक इच्छा पूरी होती है, उसके हायर लेवल की इच्छा पैदा हो जाती है. जैसे 2 बेडरूम फ्लैट ले लिया तो 3 बेडरूम लेने की इच्छा अपने ऑटोमेटिकली आ जाएगी.
3 बेडरूम का अगर घर ले लिया तो फिर 4 बेडरूम 5 बेडरूम का दिमाग में आ जाएगा। तो इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती, बट कंसिडर दिस, you fulfill all your desires and you are free from the desires. How will that life be? Just think, just imagine कि आप अपने desires को पूरा कर रहे हैं, desires के साथ अटैच भी नहीं हो रहे और पूरी फ्रीडम के साथ आप अपने desires को fulfill कर रहे हैं. How will that life be? Imagine that. That is the promise of this program. Correct? So I'm coming to your point, गुंजन जी, वो थर्ड है, तो मैं अभी फर्स्ट और सेकंड पे आ रहा हूँ पहले. सेकंड है फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग एंड मिजरी. Suffering and misery is very common. 99% of the population will have some kind of suffering and misery, right? पर suffering और misery किसकी creation है? खुद की। भगवान की, लोगों की, हमारे खुद की. So once you are clear about this, that I am the master of my life, I am the master of my karma, I am the master of my destiny, which you will get very profoundly in this program. तो आप blame करना छोड़ दोगे. Freedom और suffering की responsibility आप खुद लोगे. जिस दिन आपने वो responsibility ले ली, you will be free. So you will be free from suffering and misery. But having said that, let me tell you, karmic pain हमेशा रहेगा, क्योंकि कर्मास का जो पेन है वो तो रहेगा ही रहेगा. तो पेन इज इनएविटेबल, पेन कभी नहीं जाएगा. लेकिन सफरिंग और मिजरी, जिसको हम आम तौर पे मैं उससे बोलता हूँ ड्रामे तमाशे, तो हम अपनी लाइफ में जो ड्रामे तमाशे क्रिएट करते हैं ना, वो बंद हो जाएंगे. पेन होगा, बट यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस इज माई कर्मास, ये मेरे कर्म है जो लौट के आए हैं. तो उन पेन को आप आसानी से, विदाउट गेटिंग इनटू द मोल्ड ऑफ ए विक्टिम, without becoming a Dilip Kumar or a Meena Kumari, you will be able to live your life powerfully. Get that? तो ट्रेजेडी किंग नहीं बनेंगे, ट्रेजेडी क्वीन नहीं बनेंगे. आप पेन को पेन की तरह हैंडल करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे. तो दिस विल गिव यू फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग एंड मिजरी. एंड द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हम ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो ब्रह्म ज्ञान जो है ये हाईएस्ट विजडम है. वेदांता इज ऑलवेज द हाईएस्ट विजडम ऑफ द वेदास, राइट? और उसमें सबसे पहला ज्ञान क्या है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं. तो मैं बॉडी कॉन्शियसनेस से जब मैं सोल कॉन्शियसनेस में जाऊंगा, तो आई विल बी फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ डेथ. फियर ऑफ डेथ क्यों आता है? बिकॉज आई थिंक आई एम द बॉडी, आई एम कन्विंस्ड आई एम द बॉडी. बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, हाँ मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ. ये सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. ना आग शस्त्र मुझे काट सकते हैं, ना आग मुझे जला सकती है. और फिर छोटी सी उंगली में छोटी सी गैस पे अगर थोड़ा सा हाथ जल गया तो देखो कितना उछलते हैं फिर हम. तो क्यों इतना उछल रहे हो? व्हेन यू से आग मुझे जला नहीं सकती, रटा हुआ है. लेकिन गैस में उंगली जल जाए तो यू ब्रिंग द रूफ डाउन. करेक्ट? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज रियलिटीज. जो रियलिटी हम जी रहे हैं और जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है. बट व्हेन यू एक्चुअली गेट एस्टैब्लिश्ड इनटू द रियलाइजेशन कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, देन यू आर फ्री फ्रॉम द बॉडी कॉन्शियसनेस. तो डेथ किसकी होती है? बॉडी की होती है, सोल की होती है? बॉडी. करेक्ट? तो इफ यू नो आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल, एंड यू आर कंप्लीटली एस्टैब्लिश्ड इन दिस ट्रूथ, व्हाट विल हैपन? फियर ऑफ डेथ खत्म हो जाएगा. अब सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा है, ये 4 महीने लगते हैं इसको रियलाइज करने में. करेक्ट? देन इट विल बी, क्योंकि हर प्रोग्राम में हर हफ्ते आपके ये अंदर ड्रिल किया जाएगा विद एग्जांपल्स, विद स्टोरीज, विद प्रैक्टिस. एंड देन फाइनली यू विल रियलाइज, यस आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल, एंड सो आई एम फ्री फ्रॉम डेथ. और ये ब्रह्म ज्ञान और ये सेल्फ रियलाइजेशन का बात है जो आपको बहुत प्रोफाउंडली वैदिक वेदांता विजडम में मिलेगा. तो प्रोग्राम के थोड़े लॉजिस्टिक्स की बात कर लेते हैं. तो गुंजन जी, डिड आई आंसर दैट क्वेश्चन? एंड गुड दैट यू आस्क्ड, क्योंकि सारे गेस्ट के लिए भी थोड़ा सा अच्छा हो गया. लेट्स एक्नॉलेज गुंजन जी फॉर दैट वेरी क्वेश्चन. Yes, now I will take some questions, otherwise I will move on with the logistics. Yes, Monica ji, go ahead. So आपने जो भी बताया है उसके हिसाब से मुझे जो लग रहा है कि there are 2 courses, Vedic healing and Vedanta. So what are the difference between both programs? Okay, very good Monica ji. Let's acknowledge Monica ji for that. डिफरेंस की जगह मैं ये बोलूंगा उनका कनेक्शन क्या है ना. तो
सबसे पहले ये प्रोग्राम जो है ये 15 सेशंस का प्रोग्राम है. We will have 15 Sundays where you will have 1.5 hours of each program is of one session is of 1.5 hours. तो 15 सेशन 15 संडेज को 1.5 घंटे का सेशन होगा, राइट. इसमें 7 सेशन वैदिक हीलिंग के हैं शुरू में और 7 सेशन वेदांता विजडम के हैं उसके बाद, और एक जो है वो कंबाइंड रिकैप सेशन है जिसमें हम पूरे प्रोग्राम का रिव्यू करेंगे और पार्टिसिपेंट्स के साथ हम डिस्कशन करते हैं. एंड आफ्टर दैट इज 116th प्रोग्राम विच इज नॉट इंक्लूडेड इन योर बेसिक कोर्स. कोर्स का 15 हफ्ता ही मानते हैं, लेकिन ये जैसे ओरिएंटेशन हो रहा है ये 16th सेशन हो रहा है. तो ये एक अलग से एक प्रोग्राम है जहाँ पे आप अपने लाइव से गेस्ट को बुलाएंगे एंड इट विल बी एन ओरिएंटेशन फॉर गेस्ट. सो दिस इज द सेपरेट फ्रॉम दैट. तो इसके अलावा 15 सेशंस और होते हैं जिसमें हम 7 हफ्ते वैदिक हीलिंग के टेक्निक सीखेंगे. अब आप हीलर बन गए हैं सेशन सीखने के बाद टेक्निक्स, और आप हीलिंग प्रैक्टिसेस करके लोगों को और अपने आप को हील कर सकते हैं. लेकिन एक हीलर जब हीलिंग करता है तो हमारी कॉन्शियसनेस जो होती है वो 3 यू कैन से एट 3 लेवल की होती है. एक होता है तामसिक, एक होता है राजसिक और एक होता है सात्विक, करेक्ट. तो जो तामसिक कॉन्शियसनेस के साथ हीलिंग करेगा वो अपनी सफरिंग और मिजरी, अपनी नेगेटिव इमोशंस भी हीलिंग एनर्जी के साथ भेज देगा, करेक्ट. जो राजसिक कॉन्शियसनेस में है वो हीलिंग टेक्निक सारे सेम कर रहे होंगे, लेकिन वो राजसिक क्वालिटीज में अपने जो इमोशंस होंगे वो वाले इमोशन साथ में लेके भेजेगा. तो हर हीलर के हीलिंग इफेक्ट्स अलग अलग होते हैं. व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट ऑपरेटिंग फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. हीलिंग तो कर रहे हैं लेकिन हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं आती है. व्हाट वेदांता विजडम डज इज आपके कॉन्शियसनेस को वो तमस और रजस से निकाल के सात्विक में एस्टैब्लिश कर देगा. When you learn the wisdom of the Vedanta, your consciousness will move to the highest level and you will be operating from the sattvic level of consciousness. So your healing becomes much more powerful. So the combo of Vedic healing and Vedanta wisdom has created magic and miracles for many people. And that is why I have made this one program. पहले अलग-अलग था, if you remember. But now I made it a combo program. एक ही प्रोग्राम करता हूँ मैं और इसमें दोनों के बेनिफिट्स बहुत अच्छे से ऐड हो जाते हैं and it gives you a complete package. So does that answer your question, Monica ji? Or you still have any question? Yeah, actually, I just want to ask one more question. Hmm. What because मैंने already Vedic healing का करा हुआ है course, so I still have to join this, or should I will do only Vedanta healing? You can do both, but a lot of changes have happened in the last 2 years, and I think you were in the first program of having done it. So my suggestion would be you can do the whole program again, and you will be considered as a graduate. That I can give it to you, like you have already done that program, the complete program before. So in that case, the energy exchange for you will be, for repeating the program, will be 3,333, which is perfectly fine. तो आपके लिए उसी में पूरा प्रोग्राम आप कर सकते हो. वैसे वेदांता विजडम करना चाहो तो भी उतना ही है, पूरा प्रोग्राम करोगे तो भी उतना ही है. सो आई सजेस्ट यू डू इट, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर, राइट. परफेक्ट, बहुत बढ़िया. लेट्स एक्नॉलेज मोनिका जी. Rajesh here, sir. यस राजेश जी, गो अहेड. So मुझे ना actually I have to travel, so I have to switch off my video. I'm traveling, but I'm comfortable talking. नो प्रॉब्लम सर, वेलकम. So my question is that what I could understand from Vedanta wisdom part, once you have mastered that or you have understood that, so your spiritual healing or Vedanta healing becomes more effective. This is what you said, sir. Yes. And just for my understanding, I would like to rephrase it. Okay, once I logically or consciously, if I can reason out something, yeah, okay, it is because of this, that's why I'm doing all of this. So then healing part automatically, when you are operating from super consciousness or highest form of consciousness, your healing becomes more effective. This is what you are saying, sir, or something else? Yes. Having said that, you are absolutely right what you said. Higher level of consciousness will lead to magical healings. Normal level of consciousness will give you ordinary healings. Correct?
So that is one So differentiation. this, so how do I get that higher consciousness part? Is my understanding how it all works, that will give me No, that no, no. higher consciousness? No, Or I'll some, explain that. you I will will be, explain that to you. I'll explain that to you. yes, जब आप फर्स्ट सेवन सर मैं समझ गया, मैं आपको जवाब ही दे रहा हूँ, ठीक है जी। तो जब आप पहले 7 सेशंस करेंगे, आपको सारे हीलिंग टेक्निक्स मिल जाएंगे, राइट? आप उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे एंड यू कैन हील योरसेल्फ एंड यू कैन हील अदर्स, नो प्रॉब्लम। तो नो हाउ इट वर्क्स, व्हाट यू हैव टू डू, ऑल द टेक्निक्स, जो अलग अलग टेक्निक्स हैं हमारे, वो सब आप सीख जाएंगे पहले 7 हफ्ते में। यू विल बी ए कंप्लीट पैकेज ऑफ ए हीलर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी हीलिंग अगर लोअर कॉन्शियसनेस में रह के करेंगे तो वो मैजिकल रिजल्ट्स नहीं आएंगे। जो आप वेदांता विजडम के बाद आपकी कॉन्शियसनेस बहुत हाई हो जाती है, that 7 weeks are only for raising your consciousness to the higher level. Right, Okay? sir. So in So that case, I you want will to be understand, creating. sir, what exactly. Sorry. हाँ जी, Go ahead, sir. Go ahead. तो मैं यही बताना चाह रहा था, वेदांता विजडम के 7 सेशंस के बाद आपका कॉन्शियसनेस लेवल इतना हाई हो जाएगा कि आप सात्विक लेवल पे जाके हीलिंग कर पाएंगे। योर कनेक्शन विद द डिवाइन विल बी वेरी वेरी प्रोफाउंड एंड स्टेबल, and then you will be able to create magic and miracles not only for yourself but for others. So that is why this has been packaged in such a way that it is a 15 weeks program. Otherwise सिर्फ हीलिंग का पहले जब मैं करता था तो 7 हफ्ते में खत्म करके मैं भेज देता था, और वेदांता विजडम अलग होता था, वो भी 7 हफ्ते का होता था। बट नाउ आई कंबाइंड इट एंड मेड इट ए 15 weeks program, right? Okay. So my experience Right, is sir. this works better for the healer as well as for the healed. That is why this has been created this way. So, Right? my question is, sir, yeah, just to further clarify myself. Yeah. Okay, super consciousness is you are in a heightened state of awareness, or at state level you are at a very high performance state or a high intensity state where you are more effective in any given context. Yes, you can say that. I will not say super consciousness state. I will simply say आपके जो कॉन्शियसनेस है या तो मूलाधार पे हो सकता है, ठीक है, 7 मेजर चक्रास है हमारे, तो आपकी कॉन्शियसनेस इन 7 में कहीं ना कहीं होगी। मूलाधार में हो सकता है, स्वादिष्ठान में हो सकता है, मणिपुरा में हो सकता है, अनाहट में हो सकता है, फिर आपके जो थ्रोट चक्र है उसमें हो सकता है, थर्ड आई चक्र पे हो सकता है ना? तो विशुद्ध चक्र हो गया या फिर आज्ञा चक्र हो गया। इन्हीं 6 चक्रास में आपकी कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं होगी, करेक्ट? तो जैसे जैसे आप ये हायर कॉन्शियसनेस की बात करें, तो आप अगर मूलाधार के कॉन्शियसनेस से हीलिंग करेंगे तो ऑर्डिनरी हीलिंग होगी। अगर आप आज्ञा चक्र के कॉन्शियसनेस से हीलिंग करेंगे तो बहुत अच्छी हीलिंग होगी। यू कैन अंडरस्टैंड इट दैट वे। Right. करेक्ट? Sir, I got that. Yeah, got that. या एक और अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं आपको, तो अगर आप रिवर गैंजेस की बात करें तो हुगली में जो आपको पानी मिलेगा और जो गंगोत्री में पानी मिलेगा, दोनों की क्वालिटी अलग होगी, है ना? है तो गंगा ही, जी हाँ, वही बात है। तो ऊपर के लेवल पे, ऊपर के चक्रास में आपको प्यूरिटी बहुत हाई मिलेगी, है तो गंगा जल ही, लेकिन नीचे बहुत इम्प्योरिटीज हैं, तामसिक क्वालिटीज बहुत जुड़ गई हैं, राजसिक और तामसिक क्वालिटीज बहुत जुड़ जाती है। नीचे ऊपर जाएंगे तो आगे चक्र पे आपको सिर्फ सात्विक क्वालिटीज मिलेंगी, तो गैंजेस विल बी मोर प्योर देयर। yes sir, that's how you so can like connect with it. yeah sir. So just I think one more clarification, okay, Yes. for me only, okay, like you would be during the Vedanta wisdom, we would be having all the understanding about the chakras as well. वो तो पहले साथ में ही मिल जाएगा सर। वेदांता में चक्रास की कोई बात नहीं हो रही, वैदिक हीलिंग में ही मिल जाएगा वो वैदिक हीलिंग में मिल जाएगा। और इसमें आप हमें ये बताएंगे कि भाई आप किस चक्र से ऑपरेट करेंगे, किस तरह की नहीं, वैसा कुछ नहीं है। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा था। ये स्टडीज का पूरा मटेरियल अलग अलग है, वेदांता विजडम का पूरा कंटेंट अलग है, वैदिक हीलिंग का पूरा कंटेंट अलग है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, इट इज अ कंप्लीट पैकेज। यू विल गेट द रिजल्ट। रिजल्ट क्या है मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी? So I'm super curious, sir, to have to experience the results. Welcome. Thank you very much, sir. You are at the right place. Welcome to the program. Let's acknowledge Rajesh ji.
Thank you, sir. Right. Now, not giving more theory, let me have some sharing. So who would like to share? Preeti ji, go ahead. After that, we will hear from Sanjay. और कोई है बीच में जो बोलना चाह रहे हैं? Let me check. That's fine. Yes. So Preeti ji, go ahead. I started my journey, आपको पता ही है कोविड के वक्त. उससे पहले I was aware of all these modalities. I was practicing meditation. I was well connected to my body. आपको पता ही है. That time मुझे पता था कि something is there in my body. तो मेरी कैंसर की सर्जरी हुई थी. उसके बाद से फिर कोविड में I learned this healing method with you. उसके बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले. आपको पता ही है सारी मेरी जर्नी के बारे में. आप एक फ्रेंड की डॉटर की मैंने हीलिंग करी थी, मैंने और आपने ही शायद. तो उसका रिजल्ट ये है कि आज शी इज हैप्पीली मैरिड. शी इज नाउ मैरिड. कोविड में वी ऑल डिड मिरेकल हीलिंग्स. जो डॉक्टर्स ने जिनको बोला था कि नहीं कुछ होगा, उसके बाद भी दे आर स्टिल विद अस टुडे. बट अभी मेरे फादर की मैं हीलिंग आई वाज डूइंग ओनली फॉर माय फैमिली कुछ टाइम से, एज माय फादर वाज ऑन बेड. तो आई शिफ्टेड माय प्रायोरिटीज टू बी विद माय फादर. देन अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से बेटर मुझे लगा था इस वक्त कि मेरे फादर को शायद मेरी ज्यादा जरूरत है, तो प्रायोरिटाइज मैंने उनको ज्यादा करा था अभी. तो आफ्टर ही पास्ड अवे, एक अभी रिसेंट इंसिडेंट हुआ ड्यूरिंग ऑल दोस 13 डेज. एक फ्रेंड, उसकी डॉटर, उसकी उनकी वाइफ का एकदम से कोई नस फट गई थी ब्रेन की, अभी रिसेंटली ड्यूरिंग दिस 13 डेज ओनली. तो उन्होंने मुझे फोन किया. मैंने कहा देख, कि मैंने कहा व्हाट इज डॉक्टर सेइंग. तो कहते हैं कि ब्लीडिंग नहीं रुक रही है कैसे भी. तो मैंने कहा अगर तू मुझे बोले तो आई कैन हील, आई कैन ट्राई एंड हील हर. और मैंने आधा घंटा उनकी कमरे में बैठकर अपने रूम लॉक किया. पापा की, जब मुझे पता 13 दिन कुछ कर तो सकते नहीं है, तो मैंने हीलिंग करी. और 1 घंटे के बाद जब मैंने फोन किया, मैंने कहा हीलिंग ब्लीडिंग रुकी. ही सेड रुक गई. और वो आज मैं आफ्टर 13 डेज आई वेंट मेट हर. शी इज परफेक्टली फाइन. अब वो घर पे भी आ गई हैं, डिस्चार्ज हो गया है. अग्रीड थोड़ा सा इतना ब्लड लॉस हुआ था कि उनका हेमोग्लोबिन इज 5. तो मैंने कहा रिकवर हो जाओगे आप. तो आई एम डूइंग उनकी हीलिंग. लेकिन मतलब आई वाज थिंकिंग कि इतने ग्रीफ में भी इफ माय हीलिंग्स कुड वर्क एंड सेव वंस लाइफ, सो दिस इज समथिंग व्हिच इज मिराकुलस एंड वर्थ लर्निंग. क्योंकि मैंने तो आपके दोनों प्रोग्राम्स कर रखे हैं, इवन वैदिक हीलिंग भी और वेदांता विजडम भी. तो आई एम प्रैक्टिसिंग एज हीलर फ्रॉम पास्ट 4 years आई गेस. तो आई थिंक कोविड के बाद से ही आई एम प्रैक्टिसिंग हीलर, 3 साल जो भी है. बट आई हैव डन contributed in many people's life in a small way or the other by helping them in different ways. But yes, जब मुझे लगा था इतने grief में I was in lot of pain because I was very attached to my father. तब उस pain में भी I could heal a person with all my power. That means I have something in myself. So I want to bounce back. So I've started थोड़ा बहुत. I'm healing. मैंने healing कभी छोड़ी नहीं थी. I was only healing myself, my family, my parents. बट नेवर लेफ्ट इट. लेकिन हाँ, कोई बहुत ज्यादा पेन में होता था तो मैं उसकी हीलिंग कर देती थी, बिकॉज मेरे को उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था. यू नीड सम टाइम फॉर इट. और मेरा पूरा 24/7 आई वाज ऑक्यूपाइड विद माय फादर. तो अब उनके जाने के बाद मुझे लग रहा है कि इट्स अ वेरी बिग वैक्यूम फॉर मी. तो फॉर कमिंग आउट ऑफ इट, तो उसके बाद से आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग. लेकिन अभी तक होता है ना कि एक एनर्जी नहीं आ रही है. सो फॉर दैट आई एम बैक. मुझे पता है कि इट विल टेक सम टाइम, बट आई विल बी बैक. Perfect, Preeti ji. बहुत बढ़िया sharing. Let's acknowledge Preeti ji. She is one of the participants of the first batch of our healers program, and then she did the Vedanta wisdom program also. जो हमारे अभी यहाँ पे जितने लोग हैं उन सबके साथ I think Sanjay और Preeti ji were in the first batch, right? So it has been a great journey, Preeti ji. Let me acknowledge you for that. क्योंकि इतने पर्सनल ट्रेजेडी से होके अभी इतनी जल्दी बाउंस बैक करना भी इसीलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग हीलिंग एंड द विजडम पार्ट, राइट. एंड इसी सिचुएशन में आप लोगों की हीलिंग कर रहे हैं, वो भी तो क्रिटिकल हीलिंग कर रहे हैं. दैट्स रियली हैट्स ऑफ टू यू. सो यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग इट वेरी वेल. आपके सबकॉन्शियस लेवल पे आई न्यू दैट फ्रॉम 2 months बैक. मैंने आपसे बात भी करी थी कि मुझे नहीं समझ में आ रहा व्हाई आई एम सीइंग पापा का ट्रांजिशन. आई ब्रॉट हिम बैक फ्रॉम हॉस्पिटल. उस वक्त मैंने हीलिंग करी थी. तब डॉक्टर्स ने कहा था कि वो नहीं बचेंगे. तब डॉक्टर्स ने कहा था जस्ट एक कोई किस्मत ही, कोई दुआ ही काम आ जाएगी. दैट टाइम आई वाज हीलिंग हिम एंड आई ब्रॉट हिम बैक फॉर 8 months. लेकिन अब मुझे 2 महीने से आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट.
कि वो जाने वाले हैं, वो ट्रांजिशन मुझे दिख रहा है, तो आई वाज हीलिंग हिम कि ठीक है, लेट इट बी अ वेरी पीसफुल ट्रांजिशन फॉर हिम. And in fact, he has been बट healing his karmas. बहुत बहुत strong healing हुई है उनके कर्मास की, तो obviously उनकी जो next journey होगी बहुत अच्छी और बहुत peaceful आगे journey रहेगी उनकी. Yes. So wonderful healing experience, Preeti ji. Wonderful sharing. Thank you. And I'm sure you will bounce back faster. Vacuum तो रहना थोड़ा सा natural है, because when you lose दैट इज वेरी नेचुरल somebody very वैक्यूम. close to yourself, वो vacuum थोड़ी दिन रहेगा, but then I know, I'm sure you will bounce back with your healing. Yes. Thank you. Yeah. Let's acknowledge Preeti ji for that. Very good. Right. Anybody else who has any question? Anybody who wants any question to be shared? कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? Okay, so in that case, Sanjay, over to you. Thanks, Shashi. And good morning, good afternoon, or good evening to all the participants. I think my name is Sanjay Trika. I am based at Singapore for the last 15 years. I think enough have been said about the health and the health benefit. And I would like to concentrate also on the other dimensions, which is wealth, of course, which is also an important part of our life, daily life. Relationship building, I think Gunjanji alluded to it during her talks, how the relationships really worked out well. And finally, ultimately, leading all this to happiness. मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि there are a lot of times when Shashi ji and me have even worked healing on a lot of काम जो रुके हुए थे हमारे. Okay, so something you feel is stuck. It's not coming to me, right? I have worked enough, everything has happened, नहीं आ रहा है. आप इधर उधर जाते हैं, देखते हैं, ज्योतिषी भी आपको बोलता है कि Lord Shani is not so benevolent on you, so you have to do this. You can even try healing out there. We have experienced miracles. I mean, I have experienced miracles along with Shashi ji's help, and I think Gunjan ji and Preeti ji also knows, because I had the opportunity of sharing with my group over here. Well, I'm working in an MNC company which spans over APJ, which means that, daily life or corporate life is the most challenging part of my daily routine, right? So, and of course, couple it with the family and other kind of tensions, it becomes very important, roda or patthar in the in my progress journey. So one of the most important deliverables of this program, and it may surprise some of you, is, what I have gained is building a positive, strong attitude, right, to face this problems in the life, immaterial of the circumstances. तूफान आ रहा है, तेज हवाएं आ रही हैं, बारिश तेजी से गिर रही है. Your response or your mental state remains absolutely calm and quiet. And when you do that, divine connection will happen. Okay, I think that's what I just wanted to say. And that's the punchline, according to me, which can help summarize this program well and also answer a lot of questions. Well, I have been a graduate here, as Shashi ji mentioned, which means I have been in this program for 2 to 3 years. Now, you may be wondering, this course gets over in 4 months. How the hell he has been here for? So has he done course, 4 to 5 times? Well, the answer is yes. Yes, and let me also answer, I'm not a poor learner. My academic records can vouch for it, right? In case you plan to do the LinkedIn test. The course is so addictive, believe me. And this I don't say, unless this I say because every time you are in this course, maybe the topics are same, but as Shashi ji also mentioned, there is an evolution of this course. Not only the course has evolved over the time, when Preeti ji and me started, but we are also evolving, and evolution is a gradual process. As Shashi ji alluded, whether you are on the tamasic, and you are trying to take your elevation journey to sattvic or, higher state, it is a gradual step. There is no shortcut. There is no accelerated path.
I think these are sort of the things which you will experience gradually and you will realize. And unless and until you realize, no amount of answers and the response coming from other person can help satisfy that. So my point is, why deprive yourself of this bliss, happiness, and transformation program and the good path to happiness, right? You should be, I will urge most of you to start this. I mean, don't consider this low. And just also referring to the other point, which I think was alluded in the question part, and I will go with my favorite example. We all know how good is physical cleanliness and hygiene, right? And for that purpose, we take bath. For our physical fitness, I think we jog or we walk, do a morning walk or other exercises, whatever everybody likes. Correct? But what about the most important point, the mental state? How do you make sure, or how do we make sure that the mental state is also taking its regular bath daily or becoming more fit to face the circumstances, right? The mental state, various state, and each one of us could be in a different state, correct? Somebody may be overflowing with joy, somebody maybe with agony, anguish, anxiety, anger, right? Guilt, depression, etc. Correct? And these mental states are in various journey or various states, and you have to make sure, or each one of us have to make sure that we apply the right lotion or right balm to it, right? And also not only that, so each one is different and unique. Not one gloves can solve all the problem, correct? Because hands and the hand sizes are different. So, we have to cure them typically in the way I think any hospital does. So, two ways. One is you go directly to the disease when you have fever or when you have a pain, you meet the doctor says, okay, this is the particular root cause of it. So you try and go to the root cause of it and address through your healing techniques, right? So that's point number one, which is getting covered in the first 7 sessions of this course, which is the healing techniques, right? Second part comes with the hygiene factors. The hospital, as you know, is an embodiment of cleanliness as well as hygiene, right? And we all saw that during COVID days, how it was an epitome of all that. Now you need to maintain, healthy state by using disinfectant, Dettol, Lysol, blah, 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 whatever you do that. So how do you do it over here? Now here, as per me, the Vedanta principles, which gets ingrained in your mental state, right? They come to your rescue or as guiding principle. If you follow Vedanta principle, believe me, any eventuality in your life, you can be hardened enough to face it. Your mind becomes too much inured. But to reach that state, I think the journey has got to be good. And last but not the least, the hospital, could be lost in its objective unless and until it has a good doctor, right? Which can guide you to the right path and take it. And fortunately for us, we have Shashi Dhar, right, who is the doctor over here, and he has been not only guiding us but illuminating our life mentally as well as taking us to the right particular path. So, in the end, I will just urge all of you, don't miss this opportunity. Don't let this urge to overcome all these obstacles and rise up in your quest for happiness. Get lower in your priority list, prioritize it, and join it today or join it now, depending on your schedule. Because believe me, it's not just at the end of 4th month you will understand everything on it. Gunjanji, Preetiji, and I think, did I miss out somebody? All these graduates, and even Shashiji himself says, we are all learning, and although we are in a different stages of our journey and of life cycle, so take the first baby step, and start over there. Thank you. I think I'll stop here in the paucity of the time. Adding to Sanjay, I feel every time when we revisit Vedic, this Vedanta wisdom and everything, we feel there are new participants, they are giving us kuch aur de rahe hain. So we learn from each participant there also
ठीक समटाइम्स वो हमारी बत्ती जला जाते हैं कि अच्छा हमने व्हाई डिडंट वी थिंक दैट वे. So this is a very powerful. Absolutely. I mean, thanks, Preeti ji. You not only cure yourself, but you develop a good, friendly community relationship, like a social media of positive people around you. Right? How is that? Filtered and keeping you more illuminating and positive. I think that's what, Preeti ji was alluding. Thanks, Very Preeti good, ji. very Yes. good, very good, Sanjay and Preeti ji. Let's acknowledge Sanjay for his wonderful sharing and the brilliance of IIT and IIM showing through. Yes, so Sanjay, great sharing. Okay, and let me just welcome somebody who has just joined in. Kahan gaye? Ayushi ji, if you're here, if you want to share something, if you have anything to ask, please go ahead. I think you have just joined in. And Rupa, if you're there, if you want to share something, please go ahead. Yes, Ayushi ji, anything you want to share? आप अभी आपने ज्वाइन किया है, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? आप म्यूट पे हैं. ये सीमा आप म्यूट पे हो. She is हाँ, Seema. Yeah. हाँ, Oh, She is she's my Seema. school friend. Okay. Yes. Oh, your school friend. Okay. So, नमस्कार Yeah. सभी को जी. मैं सीमा धामा. हाँ जी. हाँ तो जी कुछ सर, बहुत हाँ नहीं सर, अच्छा लगा ये सेशन, एक मोटिवेशन मिला है इसको ज्वाइन करने का. बहुत सारी चीजें आज जानने को मिली. ओके गुड. तो आपने शायद काफी मिस कर दिया है, तो इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी. बी इन टच विद हाँ, रंजना, शी विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग, राइट? राइट. एंड अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे 1-to-1 बात कर सकते हैं. ठीक है जी. Welcome and be there. We are going to close in another 10 minutes, and after that you can be watching the recording. Yes. Okay. Let's acknowledge Ayushi ji for her commitment to at least join the program. Yes. Very good. Rupa, if you're around, if you want to share something, please go ahead. I'm not being. Can you listen? Can you hear me? We can hear you. Okay. Okay, because I'm not being able to, connect her. So I thought, anyway, I mean, after what Sanjay said, I have nothing left here because he did a very powerful, explanation of what the program is and how it helps. But in a simple language, I can only say that it has helped me a lot because I was mentally, physically, in a sense, when your mental level is good, definitely it affects your physical too. तो ये जो program है जो शशि चला रहे हैं, this has helped me internally to become more calm. I think I've become more calm to accept the situations and the changes in the life, how it happens. The wisdom has helped me to overcome whatever questions I had internally for myself. And अगर मैं crib करती थी या मेरे को गुस्सा चढ़ता था या whatever, I know that ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, that wisdom. In the whole, I would say काफी शांति मिली है. To deal whatever changes happen in your life. So thank you, Shashi. I mean, I'm not that good with words, but like Sanjay has presented, मुझे तो शर्म आ रही है बात करने में. But honestly, I'm so thankful to you, so very thankful to you, because internally सारे questions and सारा बहुत peace मिलता है mind में to accept my everyday life, how Thank it you. goes. Thank you so Rupa. much. Let's acknowledge Rupa Thank for you. her sharing, and let me tell you, it is past 3 o'clock, I suppose, for her, and she is still there. And just to share this, she is awake. So thank you, Rupa, for doing that. And let me tell you one thing: when you talk of mind, one thing we have to be very clear. जब आप स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ रहे हैं, तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा बैरियर आपका माइंड है. और स्पिरिचुअल अगर आप एनलाइटनमेंट चाहते हो तो माइंड के बिना पॉसिबल भी नहीं है. So you have to understand, if the mind is negative, it will be a big barrier for you, and if the mind is positive, it will propel your spiritual journey. And this whole thing, this program is all about, Vedanta wisdom is all about cleansing your mind, cleansing your चित्त. जो संजय ने इतने अच्छे से बताया कि अपने चित्त को साफ करना है. तो अगर हम वेदांता विजडम के सिर्फ विजडम को ही पकड़ लेंगे, चित्त हमारा शांत हो जाएगा. तमस से आप
सत्वा में आ जाएंगे, and with this healing techniques you can actually transform any area of your life. Anything is possible if you are really committed to getting the techniques and the wisdom. And that is what I would invite all of you to look at this program as an opportunity to transform all the areas of your life. How many of you want magic and miracles in your life? How many of you want magic and miracles in your life? Stupid question. Yeah, everybody wants that. Yes. So this is an opportunity for you. And trust me, human beings के हाथ में नहीं होता, ये divine के साथ ही होता है. So unless you have the divine grace and blessings, you will not create magic and miracles in your life. And here is an opportunity for you to be absolutely aligned with the divine magic. So that is opportunity for you. And let me tell you, जब भी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है तो उस समय एक, मैं अक्सर बोलता हूँ, उसको शास्त्रों में भी बोला गया है, निर्विकल्प संकल्प लेना जरूरी होता है. Kill all the options and take a decision. इसको निश्चयात्मिका बुद्धि भी बोलते हैं. A mind which can take a decision, an intelligent mind which can actually take a correct decision at the right time. And if you are what you have heard, if you think that that is something that you want in your life, declare to the universe, मैं ये program कर रहा हूँ या कर रही हूँ, and then see the magic happening. The universe will make way for you. All the constraints of time नहीं है, मेरे को और जगह जाना है, मेरा कैसे होगा, trust me, it all works. क्योंकि वैदिक हीलिंग के जो टेक्निक्स है, विजडम में तो कोई टेक्निक है ही नहीं, उसमें तो सिर्फ विजडम मिलनी है आपको. लेकिन जो वैदिक हीलिंग के टेक्निक्स है वो आप 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं अपने हिसाब से. दो आई नॉर्मली सजेस्ट कि 1 घंटा निकालिए दिन में, लेकिन अगर वो 1 घंटा नहीं भी निकालते हैं, स्पेसिफिक नहीं है, आप सोते हुए कर सकते हैं, आप ट्रैवलिंग में कर सकते हैं. जैसे मैं जब प्रैक्टिस करता था, अभी भी करता हूँ, तो चाहे मैं टैक्सी में जा रहा हूँ या ट्रेन में जा रहा हूँ या फ्लाइट में जा रहा हूँ, आई कैन हील माई सेल्फ. मेरी चैंटिंग अंदर लगातार 24 आवर्स चलती है. So if you can do that kind of a practice, you can do healing anytime, every time, whenever you want, 365 days a year. So that is the kind of program. इसमें कोई specific time निकालना जरूरी नहीं है, but yes, you will have to do some specific activities. तो थोड़ा time निकालना पड़ेगा, लेकिन अपने planning के साथ आप कर सकते हो. And of course, the Vedanta wisdom is mind blowing every time, just like the participants shared. Every time I conduct this session, I evolve in my consciousness. So मेरा कोई भी प्रोग्राम पहले प्रोग्राम से बेटर ही होता है अगला प्रोग्राम, क्योंकि तब तक मेरी भी इवोल्यूशन 4 महीने में आगे हो जाती है. एंड इट इज ऑलवेज बैक टू बैक, वन बैच एंड्स, अनदर बैच स्टार्ट्स. तो 4 साल में माय कॉन्शियसनेस हैज टेकन अ बूस्टर डोज, आई कैन से दैट मच. So what I gave in this program will be absolutely amazing for all the participants. Yes, Gunjan ji is absolutely banging on to share. Go ahead. सर मैं एक ही बात कहना चाहूंगी सबको, जिंदगी में खुश रहना है तो ये प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और अगला जन्म भी सुधारना है तो भी ज्वाइन कर लीजिए. क्या बात वो है. मेरी प्रिपरेशन तो अगले जन्म तक की भी है. Yes, because as a soul you are going on multiple births. तो आपके कर्मस जैसे जैसे Yes. हील होंगे, आपकी अगली लाइफ It's अच्छी not ही होगी. about, yes, it's not about this life only, it's about other further lives also. So But I'm ऐसा नहीं है कि preparing for other, yes, this life also and further lives yes, also. ऐसा नहीं है कि अगले जन्म के लिए ही करना है, इस जन्म में कुछ नहीं, इस जन्म में भी होगा. बल्कि आज हीलिंग करिए, हाँ जी, आज रात को अच्छे से सो पाएंगे. बत्ती जल गई सर, बत्ती जल गई थी. Yes, अगर लाइट नहीं है, कोई ब्रेकडाउन चल रहा है, यू जस्ट इंटेंट एंड योर इंटेंशनल पावर विल बी सो पावरफुल, योर इंट्यूशन विल बिकम सो पावरफुल. जो आप सोचोगे, जो आप चाहोगे, वो होने लग जाएगा. एंड आई एम जस्ट टेम्प्टेड टू कोट फ्रॉम स्वामी विवेकानंद. तो स्वामी विवेकानंद जी से एक बार पूछा गया कि डू यू हैव एनी डिजायर्स. तो उन्होंने क्या जवाब दिया मालूम है? कहता आई डोंट हैव एनी डिजायर्स बिकॉज इफ आई डिजायर इट विल हैपन. इसलिए आई डोंट डिजायर एनीथिंग. इतने पावरफुल थे वो कि वो जो सोचेंगे वो हो जाएगा. कहते इसलिए मैं कोई डिजायर नहीं करता. जस्ट इमेजिन इफ यू थिंक डिजायर ए ब्यूटीफुल हाउस, इट विल कम. कहता अब प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे को, अब मैं क्या करूंगा उस घर का, यू नो. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर सो पावरफुल इन योर इंटेंशन एंड इंट्यूशन. आप जो सोचोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा. तो सोच समझ के मांगना, क्योंकि वो हो जाएगा. करेक्ट. So that is the power of this program. So let me take any question. Anybody else? मनदीप जी, आपने कुछ नहीं कहा, कुछ कहना चाहेंगे? मनदीप, मंचंजा जी, बलजिंदर जी, anything that you want to share?
Otherwise, we will be closing the session. Nature, I have been following what other other participants are saying, and I'm really very much preparing myself to get enrolled to this course. Even मैं पहले भी आपके बारे में सुन रहा था, आपके ग्रुप को 1-2 सेशंस मैंने पहले भी वेडनेसडे वाले अटेंड किए थे. Yes. Because of Mrs. Sylvia Paul. So she happens to be my school principal. Yes, I know. So I'm very much excited to start a new journey with you. I'm really looking forward to. Fantastic. Thank you, Mandeep. Thank you. Welcome to the program, and simply take a decision, and the universe will make way for you. Yes, Ranjana, go ahead. Sir, जो Wednesday के sessions होते हैं, they are also very awesome. Whenever I have, I get time, I join them. Absolutely. And जब भी मैं join करती हूँ, तो मुझे लगता है ये तो वेदांता विजडम हमें फ्री में मिल रही है. Because those sessions are free. In fact, let me just tell you now, logistics part of it, that was the last part of it. So having seen what the program is all about, having seen the schedule, having seen the benefits that the participants are getting, now you will be asking me, अब मेरे को करना क्या है? Logistics तो बताओ मेरे को. तो logistics ये है, this program is starting from next Sunday. अगले संडे से शुरू होगा ये, और ये 10:30 से 12 बजे सेम टाइमिंग से होगा. 1.5 घंटे के सेशन होंगे. 15 सेशन हम शुरू करेंगे, जो मैंने आपको लॉजिस्टिक बताए थे. 7 हफ्ते पहले वैदिक हीलिंग होगा, उसके बाद 7 हफ्ते वेदांता विजडम होगा, एंड एक कॉमन ओपन हाउस होगा. उसके बाद 15 सेशंस कंप्लीट हो जाएंगे. देन वी 16 सेशन विल बी एन ओरिएंटेशन लाइक दिस. ओके, सो दैट इज द लॉजिस्टिक पार्ट ऑफ इट. एंड बिसाइड्स दीज 15 programs, what you will be getting is 15 weeks of Wednesday sessions, which is free for everybody, but then for you it is compulsory. जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको कंपल्सरीली वो अटेंड करना ही है. क्यों? क्योंकि वहां पे जो कवर करेंगे वो हम दोबारा प्रोग्राम में रिपीट नहीं करेंगे. तो वेदांता विजडम के जो 15 हफ्ते का प्रोग्राम है, उसमें सिर्फ सटीक विजडम मिलेगी जो एक्चुअल में वेडनेसडे प्रोग्राम के साथ जाता है. तो वेडनेसडे टॉपिक्स भी वैसे ही होते हैं जो वेदांता विजडम को आगे बढ़ाएं. करेक्ट? So it is a very, very profound program where you will get 15 sessions of Vedanta wisdom. You will get 15 weeks of Wednesday sessions, which are free. Besides this, that's not all. What you get from me is one-to-one session with me for 1 hour session. आप Zoom session कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं. ये आपको 4 महीने के जो प्रोग्राम है उसके बीच में कभी भी आप कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो अपनी लाइफ में, तो आप मेरे साथ 1-to-1 call book कर सकते हैं. I am a life coach also, as you know, so I'll be able to solve your problems along with the healing and have some discussions, maybe with you and your partner also, in case there is any relationship issue. Correct? So that is another thing that you will be getting. And also, जब तक आप ये 4 महीने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम में, आपको और आपकी फैमिली को डिवाइन ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से सबको जाएंगे, आपकी कार्मिक फैमिली को. So you will get 4 months of spiritual healing free for your family, and trust me, उसकी cost ही जो है that will be much beyond the program fees what I am actually charging. So now your question will be energy exchange कितना है, program fees क्या है. तो इस program fees, ये वेदांता विजडम और वैदिक हीलिंग एंड वेदांता विजडम का जो प्रोग्राम है उसकी प्रोग्राम फीस है the 4 sevens 7,777. So that is the magic figure, which is the energy exchange of the program fees. And for those graduates who are doing it again, it will be 3,333. So it is already a discounted price for those who want to repeat it, because there are many people who would like to repeat that. So that is the logistics part of it. So we are forming a group. We have already formed that group. So all of you will be getting added to it. So those who register, please get in touch with me. If you have my number, if you don't, you get in touch with your host and you will get the details. Have a one-to-one with me, and then we will complete the formalities and then add you into the group. So that is the action going ahead that you need to do. And the next week, Sunday onwards, we will start the program. Any question from anyone? Yes, Gunjan, you have raised your hand. You want to share something? That's fine. Okay. So किसी को कोई सवाल, कोई doubt, कोई questions? Okay. So with this, we come to the end of the session, end of the program. Anybody who wants to share anything, what you have got out of this program? क्या लेके जा रहे हैं वापस? As I said, you will get a lot of value for your 1.5 hours. तो आपने 1.5 घंटा यहाँ पे स्पेंड किया, अपनी टाइम एंड एनर्जी लगाई.
तो उसका आपको पूरा का पूरा वैल्यू मिला या नहीं मिला। अगर मिला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो मुझे बताइए ताकि मैं अगले प्रोग्राम इसको और इम्प्रूव कर सकूं, राइट। एंड इफ यू आर रजिस्टरिंग फॉर द प्रोग्राम यू शुड गेट इन टच विद अस एंड कंप्लीट द फॉर्मेलिटीज। यस, तो कौन बोलना चाहेंगे? मोनिका जी, क्या लेके जा रहे हैं सेशन से? कि I will try to join this course Vedanta healing because Vedic healing तो already मैं कर चुकी हूँ, so I will try to join Vedanta healing. Okay, so Vedanta wisdom is the perfect recipe for you. So आप जब भी चाहेंगे we will let you know the dates. But I would still I will have a one-to-one with you. But I will still suggest you start the program from next week. That will be better for you. ठीक है ना? So that will be the welcome. Let's acknowledge Monica ji. Anybody else? कहाँ है राजेश जी? राजेश जी क्या लेके जा रहे हैं सर? जी सर, जी सर। सो मैं तो सर एक तो इनविटेशन ही मैं बिल्कुल बहुत ही आत्मीयता से इनविटेशन ले रहा हूँ। नेक्स्ट संडे आई विल बी विद यू। Perfect, बहुत बढ़िया सर। Let's acknowledge Rajesh ji and Monica ji for having taken the, as I said, the perfect decision. जितनी जल्दी डिसीजन लेते हैं उतनी जल्दी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज का वैल्यू बढ़ता है। Yes, so anybody else who has not shared? Thank you for this session, sir, and thank you, Ranjana, for introducing me to this program. Most welcome, sir, and let's begin the spiritual journey along with you. Yes. Yes, sir. Paljinder ji, anything you would like to share? Sushil Jain ji, anything you would like to share? And Ayushi ji ने तो बता दिया कि वो चेक करने के बाद में बताएंगी, so it is okay. कोई शेयर करना चाह रहे हैं? Okay, so now the time is already we have crossed the 12 o'clock time, so I will close the session now. I will not delay it further. So thank you very much for your participation, and I hope all this was valuable for you. I will put posting the recording in the group, and you can circulate that recording to people in your group so that they can get benefited. And if they want to join us, they can get in touch with me. The group is already made, so we will add you in the group as soon as we get your confirmation and complete the formalities. With this, we come to the end of the program. Thank you very much for your time. Enjoy a great day. Enjoy a great week. Thank you, sir. Thank you, sir. From next Sunday. Thank you, sir. Thank you. Thank you all. Thank you. Bye bye. Enjoy. Bye bye. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi.